शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रथम विडियोनी अंदर अधूरो पाठ हतो आपणो, तो आ बीजा विडियोनी अंदर आपणे आ पाठ जे छे ए विस्तृत जोईए। तो के दुष्यंत बोले छे स्वयं से, पोते जाते, कि इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है कि हाँ, आनी जे मोढू छे ए माराथी मळे छे। बच्चे को गोद से उठाकर, के गोदमाथी उपाड़ीने। पूर्ववंशियों में यही रीतों का निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। कि युवा अवस्थानी अंदर जे छे ए महलनी अंदर रहीने शुं करे छे, तो के रक्षा अने पालन करे छे। और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। अने ज्यारे तपस्विनीओ जे छे ए आश्रम में वृक्षों नीचे कुटी बनावी रहे छे। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। क्या देवता जेवो जे छे ए शक्तिशाળી, निडर अने असाधारण बालक जे छे ए मनुष्यनो पुत्र जे छे ए केवी रीतना होई शके। त्यारे दूसरी तपस्वीनी बोले छे, हे परदेशी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा कि हे परदेशी, आ तारो जे संदेश छे त्यारे ज पूरो थाशे कि जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नाम का एक अप्सरा की बेटी है। कि ज्यां सुधी तू जाणी लईश कि आ बाळकनी माँ जे छे एनुं नाम शुं छे, तो कि मेनका, अने ई शुं छे, तो कि अप्सरानी एक बेटी छे। बेटी एटले बाळक छे टूंकमां। इसी के प्रताप के उनका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ था। एने जे छे एना प्रतापथी जे छे एनो जन्म छे ए देवपितरना आ तपोवनमां थयो हतो, एटले के जंगलनी अंदर। दुष्यंत बोले छे मनमा, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। कि आए शुं कर्युं, तो कि आनंदनी वात संभळावी अने एनाथी शुं थयुं, तो कि एनी आशा वधी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। कि आनी जे माता जे छे ए कया राजर्षिना पत्नी छे। त्यारे दूसरी तपस्विनी बोले छे, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। के विवाह कर्या वगर ज एने जो छोड़ी दीधा होय एनुं हूँ नाम लई शकूँ नहीं। त्यारे दुष्यंत पोते जाते बोले छे, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। के आ कथा जे छे ए मारा लगती ज छे, के हूँ आ बाळकनी मानुं नाम पूछी शकूँ। त्यारे पहली तपस्विनी मिट्टी को मोर लेकर आई। त्यारे शुं करे छे, तो कि पहली तपस्विनी छे ए माटीनो जे छे ए मोर लईने आवे छे। त्यारे पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख। कि आ जो कितलुं सुंदर छे। त्यारे बाळक, बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। कि क्या छे मारी माता शकुंतला। त्यारे दूसरी तपस्विनी बोले छे दांत काटता काटता, यह तेरी माता नहीं है, आ तारी माता नहीं। तुम इस नाम से धोखा खा गई सर्वदमन। कि आ नाम थी जे छे ए शुं छे, तो कि तू धोखा खाई गयो छे। मने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। कि मैं शुं कह्युं हतुं कि तू जे माटीनो मोर छे एने तू जो। त्यारे दुष्यंत पोते जाते बोले छे, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। कि आनी जे माँ छे ए मारी ज शकुंतला छे। यह इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। कि या इस नाम की कोई बीजी स्त्री छे। यह वृतांश मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। कि आ बात जे छे ए मने
એટલી ખૂંચે છે કે જે છે એ મૃગ એટલે કે હરણ જે છે એ પ્યાસા એટલે પાણી વગરના તરસ્યા હોય એ રીતે. ત્યારે બાળક બોલે છે ખુશ થઈને, મુझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, કે છે એ આ મોર છે એ મને ખૂબ જ ગમે છે. ત્યારે શું કરે છે તો કે આ રમકડું જે છે એ પોતે લઈ લે છે. પહેલી તપસ્વીની ઘબરા કર, ઓહ બાલક કી બાહ સે રક્ષાબંધન કहाँ ગયા, કે બાલકની હથેળીમાં છે રાખડી બાંધી હતી એ ક્યાં વહી ગઈ. ત્યારે દુષ્યંત બોલે છે घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ. કે તમે ચિંતા ન કરો, કે જ્યારે એ બારે રમી રહ્યો હતો ત્યારે એના હાથમાંથી પડી ગઈ હતી અને એ મારી પાસે પડી છે, હું તમને આપી દઉં છું. ત્યારે પહેલી તપસ્વીની બોલશે અરે અરે મત ઉઠાવ, ઉસે મત છૂના, કે ના તમે એને ન ઉપાડો અને તમે એને અડો પણ નહીં, એટલે કે મત છૂના. ત્યારે दूसरी तपस्विनी बोले छे ओ इसने तो ठीक ही लिया, के उठाई लिया, कि हाँ आने तो उपाड़ी लीधुं. दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती, कि बन्ने शू करे छे तो कि एकबीजाने आश्चर्यथी जोवे छे. दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसका उसको उठाने से क्यों रोका था, कि आ ल्यो પરંતુ તમે મને એ કહો કે તમે મને એ વસ્તુ ઉપાડવાની શા માટે ના પાડી હતી. ત્યારે दूसरी તપસ્વીની બોલે છે यह रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, કે આ રક્ષાબંધનનું નામ છે એ अपराजित છે. जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, જ્યારે આ બાળકનું નામકરણ થયું હતું, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था, કે ત્યારે જ મહાત્મા મરીચી જે છે कश्यपनो पुत्र तेमने आ दोरो आप्यो हतो. इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके, કે જો એ ધરતી ઉપર પડી જાય ત્યારે જે છે આ બાળકના માતા પિતા જે છોડીને વયા ગયા છે એના સિવાય એને બાળકને કોઈ પણ ઉપાડી શકશે નહીં. દુષ્યંત ઓર જો ઉઠા લે તો ક્યાં હો, જો એ કદાચ ઉપાડી લે તો શું થઈ શકે. ત્યારે પહેલી તપસ્વીની બોલે તો યહ તુરંત સાપ બનકર ઉસે ડસતા હૈ, કે જો એને ઉપાડી લેશે તો એ તરત જ સાપ બની અને એને ડંખ મારશે. દુષ્યંત तुमने कभी ऐसा होता देखा है. ત્યારે દુષ્યંત બોલે છે તમે આવું જોયું છે કોઈ દિવસ, અને આવું થતાં જોયું છે. પહેલી બાર, અનેક બાર, ઘણી બધી વાર. दुष्यंत बोले छे प्रसन्न होकर, प्रसन्न थईने, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, कि आ मारो मनोरथ पूरो थयो. मैं क्यों न आनंद मनाऊँ, कि हूँ केम आनंद न मनाऊँ. बालक को गोद में लेता है, અને બાળકને ગોદમાં લે છે. અને ત્યારે શું થાય છે તો કે પડદો ગરી જાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે દુષ્યંતે જ્યારે એના બાળકને ખોરામાં લીધો ત્યારે જ્યારે કશ્યપે જ્યારે દોરો આપ્યો તો ત્યારે એને શું કીધું હતું તો કે દોરો જો નીચે પડી જશે તો એના માતા પિતા સિવાય કોઈ ઉપાડી શકશે નહીં, અને જો ઉપાડશે તો એ સાપ બની અને ડંખ મારશે. પરંતુ દુષ્યંતને જ્યારે ખોરામાં લીધો ત્યારે સાપ બન્યો નહીં અને દુષ્યંતને ડંખ પણ માર્યો નહીં. એટલે એ પુત્ર જે છે એ કોનો હતો તો કે દુષ્યંતનો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ જે છે ભરત, એ આપણે આમાંથી ઘણી બધી શીખ મેળવી શકીએ છીએ. તો આ પાઠ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. આભાર.